Question 11 part 1 हम continue कर रहे हैं. This is where we left off in the last lesson. We did long division of this first because the degree of the numerator and degree of denominator were equal. So if that's the case, you have to first start with long division. After long division, we got this. So now we have to do partial fractions of this, and we're already on it. So we take LCM here, x plus 1, x plus 3. We have a times x plus 3 plus b times x plus 1. And the denominators on both sides cancel each other. So we just have minus x equals a x plus 3 times x plus 3 plus b times x plus 1. So पहले हम x equals minus 3 कर लेते हैं. So we get 3 equals b. Minus 3 plus 1 would be minus 2. So b is coming out to be negative 3 upon 2. And then I'm going to substitute x equals minus 1. So we get 1 at that side equals a times 4. Okay, a times 2. So a equals half. So the partial fractions become 1 plus, instead of this, I'm going to write this, which is half upon x plus 1 and minus 3 upon 2 times in the denominator it's x plus 3. Let me confirm. Okay, that's correct. So we have expressed fx in partial fractions. Now we integrate it. So integrate that within the limits 0 to 3 and give that answer in that particular form, 3 minus half ln 2. So integrate करते हैं from 0 to 3 dx. Okay. So 1 की integration to simply x over plus half is just the coefficient. Coefficient stays the same, and then we have 1 upon x plus 1. इसकी क्या होगी integration? हमें पता है कि if we have an fx in the denominator and its derivative in the numerator, then the integration of that is ln fx. That's the case. We have x plus 1's derivative in the numerator, which is 1. So this just becomes ln x plus 1. And then again, coefficient can be just brought outside of the integral sign, and then we have integration of 1 upon x plus 3. Same rule here, we have an fx in the denominator and its derivative in the numerator, which is 1. So this becomes ln x plus 3. And instead of writing plus c, we write the limits 3 to 0. Okay, first I'm going to substitute 3. So 3 plus half ln 4 minus 3 upon 2 ln 6. Then a negative sign. And we get 0 plus half ln 1 minus 3 upon 2 ln 3. Expand this 3 plus half ln 4 minus 3 upon 2 ln 6 minus half, okay, ln 1 is 0. So let's just eliminate this. Here to 0.
इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. So we just have to write plus 3/2 ln 3. ओके, अब लॉग के रूल्स यूज करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास ln माइनस हाफ ln 2 आए. ये कैसे आएगा? लेट्स सी. ओके, ln 4 नहीं इधर चाहिए, इधर ln 2 चाहिए. सो ln 4 को हम लिख सकते हैं ln 2 square. ln 4 is ln 2 square, which is 2 ln 2. So I'm writing 2 ln 2 here. 3 plus half, and instead of 4, I'm writing 2 ln 2. This 2 and this 2 gets cancelled. Okay. उसके बाद क्या किया जा सकता है कि अब अगेन ना 6 चाहिए ना 3 चाहिए, हमें 2 की कोई पावर चाहिए ताकि वो फर्दर सिंप्लीफाई हो. So I'm going to take 3/2 common, प्लस या -3/2. 3/2 कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास अंदर रह गया ln 3 माइनस ln 6. या नेगेटिव भी कॉमन ले सकते थे, बट चलो मैंने पॉजिटिव कॉमन ले लिया. 3/2 कॉमन ले लिया, सो वी हैव ln 3 माइनस ln 6. ये हमें रूल एक लॉग का एक और भी पता है कि if it's log AB, then it becomes log A plus log B. But if it's log A upon B, then it becomes log A minus log. So this is what's going on here, log A minus log B. So we can write it as ln 3/6, which is half. So we have 3 plus ln 2 plus this. अब मैं बाकी वर्किंग इधर कर रही हूँ. I have ln 3/6, which is ln half, which is ln 2 power minus 1, which is minus ln 2. So 3 plus ln 2 plus 3/2 minus ln 2. So we have 3 plus ln 2 minus 3/2 ln 2. So ये बन रहा है 3 minus half ln 2 after taking LCM. So 3 minus half ln. Okay, any questions here? Okay, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. The diagram shows the curve y equals this and its maximum point M. The shaded region between the curve and the x-axis is denoted by R. Find the x-coordinate of M. अब ये maximum point है, तो हमने question कैसे शुरू करना है कि the derivative at M is going to be equal to 0. So part 1 is the derivative of the curve will be equals to 0. So let's derivate the product e power minus half x and square root 1 plus 2x. Okay. Product rule use होगा, वो क्या है कि if we're derivating f times g, then it's derivate f multiplied with g plus sign multiply f with the derivative.
अब हमने दोनों को डेरिवेट करना होगा, ई पावर माइनस हाफ एक्स को भी, और दूसरे पार्ट के लिए जी स्क्वायर रूट 1 + 2x को भी। तो इसको भी साइड पे कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें इन दी एंड। ओके, सो द डेरिवेटिव ऑफ e power minus half x is, it's still e power minus half x multiplied by the derivative of this, which is minus half. So it's going to be negative half e power minus half x, क्योंकि रूल क्या है कि अगर आपके पास ए एफ एक्स है जिसको आप डेरिवेट कर रहे हो, तो उसका डेरिवेटिव होता है ए एफ एक्स टाइम्स एफ प्राइम एक्स। नेक्स्ट हम डेरिवेट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर रूट आई वांट टू राइट इट एज पावर हाफ, सो 1 + 2x पावर हाफ। So it's going to be 1 + 2x. Power comes down first, so half 1 + 2x, पावर में 1 लेस हो जाएगा माइनस हाफ, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है द डेरिवेटिव ऑफ 1 + 2x, which is 2. So this and this cancels out and we just have 1/1 + 2x power half. You either write it like that or write it as a radical sign 1 + 2x. यहाँ क्या रूल यूज किया है कि if you have function with the power on it and you have to derivate it, then it's n fx power n-1 times f prime x. इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो f prime is half e power minus half x. fx stays the same, which is 1 + 2x under a radical sign, plus, now you have to keep e power minus half x the same, and then derivate the radical of 1 + 2x. So that's going to be 1/√1 + 2x equated to 0. Now, how do we solve this? यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव साइन भी मिस किया, there's a negative sign. मैं एक सेकंड कंफर्म करूंगी यहाँ तक वो गलती तो नहीं। माइनस हाफ e पावर माइनस हाफ x is, ठीक है, ऑलराइट। अब इससे x की वैल्यू निकालनी है, तो e पावर माइनस हाफ x is common in both the expression, factorize it and we get minus 1 + 2x upon 2 and plus 1/√1 + 2x equals to 0. So let's simplify this. I'm going to do that here. Okay. So LCM ले लेंगे, that's going to be 2 √1 + 2x. इसके साथ और इसके साथ हमने √1 + 2x मल्टीप्लाई कर, so we have negative 1 + 2x square root squared, क्योंकि वो ब्रैकेट 2 दफा आ जाएगी, and then +1. So the square root opens and we get square and square root cancel out and we get negative 1 + 2x plus 1 upon 2 √1 + 2x. So that's just giving us negative 2x upon 2 √1 + 2x. 2 और 2 cancel हो गया, so minus x upon √1 + 2x. नहीं, कुछ गलत हुआ है क्योंकि इससे तो आंसर 0 आ रहा है, x 0 तो नहीं है, मुझे देखने तो क्या गलत हुआ।
हाँ ये गलत हुआ है कि यहाँ पे टाइम्स 2 और टाइम्स 2 भी तो करना था, वो नहीं किया. So when we do that, we get it 2 over here. Fix that. यहाँ पे 2 आना चाहिए था एलसीएम के बाद, यहाँ पे भी 2 आएगा. और अब ये बन जाएगा, there's a 2 here. In the numerator we have -1 -2x and then +2. There's a 2 still in the denominator, and in the numerator we have -2x plus 1. Equals to 0. अच्छा नहीं, equals to 0 इधर नहीं करते. Let's write the simplified form. E power -12x bracket -2x plus 1 upon 2 1 plus 2x bracket equals to 0. So now we have e minus half x equals to 0, or minus 2x plus 1 upon 2 times square root 1 plus 2x equals 0. e उधर जाके ln बन जाता है. ln 0 मैथ एरर देता है, नो सोल्यूशन. और यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा. -2x plus 1 equals to 0. So we're getting x equals half. So x equals half should be done. Yes, that's correct. So the x coordinate at m is equals to half. कोई क्वेश्चन है तो पूछो प्लीज. I need to clear this. Find by integration the volume of the solid obtained when R is rotated completely about the x-axis. Give your answer in terms of pi and a. तो अब ये AS का कॉन्सेप्ट आ गया, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट x-axis का फॉर्मूला होता था, पाई बाहर होता था, देन लोअर लिमिट ऑफ x, अपर लिमिट ऑफ x, फिर हम fx का स्क्वायर करते थे और dx. ठीक है, ये AS का फॉर्मूला है. ओके, सो अब मुझे लोअर और अपर लिमिट ऑफ x चाहिए. अपर लिमिट तो 0 नजर आ रही है, लोअर लिमिट देखनी है क्या होगी. सो टू फाइंड द लोअर लिमिट, इक्वेट दिस कर्व टू 0, तो इसका y 0 है लोअर लिमिट पर. सो हम e पावर -12 x स्क्वायर रूट 1 plus 2x को इक्वल्स टू 0 करते हैं. So again, we have a product that equals to 0. That means either this equals 0 or 1 plus 2x square root equals to 0. इससे तो वही ln वो आ जाएगा, which is ln 0, which is no solution. Math error, so you write no real solution or no solution. Please do not end up writing math error, उसके marks कट जाते हैं. And here we square both the sides, so we get 1 plus 2x equals 0, and we're getting x equals -half. So that means यहाँ पे x is -half. So the lower limit of x is -half. The function is e power -half x square root 1 plus 2x squared. इसको करते हैं square. So that's going to be pi 0 -half square this. So 2 and half gets multiplied. यहाँ पे करते हैं
e minus half x को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हम इंडिसेस का रूल यूज करते हैं कि जो पावर्स हैं उनके अराउंड ब्रैकेट है. That's just a m times n. So minus half times 2 is minus 1, so it becomes e minus x. So e power minus x और स्क्वायर रूट 1 plus 2x को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो सिंपली आ गया 1 plus 2x. Yeah. Okay. So अब ये बन गया क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. यू वी वाला फॉर्मूला यूज करना है. What's the formula? You're integrating a product. One has to be u and the other one has to be derivative of v. And this is equals to uv minus integration of u dash v. So first we have to select which one of these two is u and which one of these is u dash, v dash. So remember L-I-A-P-E. First linear gets to be u. If that's not there, then I is ln. No, sorry, first log, L is log. Log gets to be u, then I is for inverse, that gets to be u. A is for algebra, that gets to be u. If these three are not there, then trigonometry gets to be u. Otherwise, exponential gets to be. So we have A, algebra, so that is going to be our u. U equals 1 plus 2x. And v prime equals e power minus x. इससे u dash निकालना होता है, वो आ गया 2. और इससे v निकालना होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dash. So e minus x की इंटीग्रेशन जब करते हैं तो e minus x upon minus 1 होता है. ये रूल होता है कि e f x को अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो, it's going to be e f x upon f prime x. So that's just minus e power minus x. Now let's apply the values in the formula. So equals u is 1 plus 2x, v is minus e minus x, negative sign, integration u dash is 2, and v is negative e minus 2x dx. So we have negative e minus x 1 plus 2x. Then I'm going to multiply these two, make it positive, and also bring out 2. So this is what we have to derive. It's again going to be e power minus x upon minus 1. So we get minus 2 e power minus x. Okay. And here we have e power minus x, negative sign 1 plus 2x. Okay, limits क्या थी? 0 and minus 5. चेक करने दो यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं. Minus half minus x e power minus 2 plus 2x minus 2. ठीक है, और 0 to minus half. Correct? Let's substitute 0 in here. So it's going to be, when we substitute 0, we get minus e power 0, which is negative 1. And then we get 1 inside. And then negative 2 e power 0, which is also 1. Then we have minus e power half, और ये जो ब्रैकेट है ये 0 हो जाएगी. 1 plus 2 times minus half. ये 1 minus 1 होके 0 हो जाएगी. This becomes 0. And then minus 2 e power minus x again plus half. So we have 1 here, sorry, minus 1, minus 2, and then we have a negative sign in between, and we have 0, minus e power half. So we have negative 3 plus e power half.
ये 2 भी था आंसर में जो मुझसे मिस हुआ, तो वो 2 ये वाला मिस हुआ, it's 2 and it's 2. So this is going to be the answer. Please ask if you have any questions. So we did quite a bit in this question. Okay, अगला question start करते हैं. Okay, question 30. The diagram shows this curve where x is greater than or equal to 0 and its maximum point m. Find the exact value of maximum of x coordinate of m. इसको हम करेंगे highlight ताकि हमें याद रहे कि हमने एंड में कैलकुलेटर नहीं यूज करना और एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी, कैलकुलेटर यूज भी करना है तो एटलीस्ट गिव अ, don't give a decimal answer, give an exact answer. Okay, so that's the maximum point. So again, dy over dx is equals to 0. So we have to derivate a product again, x square square root 1 minus x square equals to 0. So x square का डेरिवेटिव हो गया 2x और स्क्वायर रूट की जगह आई एम राइटिंग पावर हाफ. इसका डेरिवेटिव हो गया हाफ 1 minus x square power minus half. Okay, and then derivate what's inside the bracket again. So that's going to be negative 2x. So times negative 2x. So then this 2 and 2 cancels out and the derivative is negative x 1 minus x square power minus half. Okay. So now I'm going to apply the product rule, which is पहले x square को derivate कर लिया, which gives 2x and 1 minus x square remains the same. अच्छा, इसको I'm rewriting it as minus x upon square root 1 minus x square. Okay. Then there's a plus sign in between. X square gets multiplied with the derivative of square root of 1 minus x square, which we've seen is minus x upon square root 1 minus x square and equated to 0. So we can take x common to simplify things. X common आ गया. So we have 2 square root 1 minus x square, and here we have negative x square upon 1 minus x square equals 0. So now we have to multiply this with square root of 1 minus x square in the numerator and in the denominator to take LCM. So we have x outside और अंदर ले लिया LCM, which is square root 1 minus x square और न्यूमरेटर में आ गया 2 times. अब square root 1 minus x square times square root 1 minus x square whole square हो जाता है. So square root 1 minus x square का square, which just becomes 1 minus x square. So that's going to be 2 times 1 minus x square minus x square equals to 0. So we get x
डिनोमिनेटर में 1 minus x square, numerator is 2 minus 2x square minus x square. So that's 2 minus 3x square. X times 2 minus 3x square upon square root 1 minus x square equals to 0. So we're getting x equals 0 or the second fraction equals to 0. उसका denominator 0 के साथ जाके multiply होके eliminate हो जाएगा. And we're getting 2/3 equals x, 2/3 square root equals x. ठीक है, इसके साथ ideally plus minus आएगा, लेकिन since the m in the figure is clearly positive, the x of m in the figure, so you just take the positive value. You don't have to mention the negative value. So it's going to be square root 2 upon 3. One second, one. Yes, that's correct. And इसके साथ लिख लो not possible, क्योंकि m origin पे तो नहीं है, तो x 0 तो हो नहीं सकता. Okay. Any questions here? That was only the first part. Next part में है, show by means of substitution x equals sine theta that the area of the shaded region between the curve and the x-axis is given by that. Substitution use करनी है और फिर integrate करके area दिखाना है कि it's equals to what's given in part. Okay, so substitution is x. पहले तो हम बगैर substitution के लिखते हैं. हमने इंटीग्रेट करना है इस कर्व को, which is x square 1 minus x square to find its area dx. x की एक वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, बट अपर लिमिट फाइंड करनी है. ये क्या है? उसके लिए कर्व को इक्वल्स टू 0 करते हैं. x square square root 1 minus x square equals to 0. So we're getting x square equals to 0. इससे तो हमारे पास आ रहा है x equals to 0. इसको इग्नोर करेंगे और 1 minus x square square root equals 0, square both sides, we get this, and then x square equals 1, which gives plus minus 1, लेकिन हमने खाली plus लेना क्योंकि वहाँ पे positive value. So the upper limit of x is going to be 1 from here. Okay. Now we use the given substitution, which is x equals sine theta. इसको हम डेरिवेट कर लेते हैं with respect to the variable on the right. Sin theta की derivation होती है cos theta. So dx is equals to cos theta d theta. Now make all the substitution, use the given substitution, change this expression. X square जो है वो बन जाएगा sin square theta. इसको square कर लेंगे. It's going to be sine square theta. Square root 1 minus x square क्या बनेगा? 1 minus sine square theta. dx बन जाएगा cos theta d theta. लिमिट्स में नहीं सब्स्टिट्यूट करूंगी क्योंकि जो 0 और 1 है वो है x की लिमिट्स, लेकिन यहाँ मुझे चाहिए थीटा की लिमिट्स. तो अभी हम थोड़ी देर तक थीटा की लिमिट्स भी निकालते हैं. मेरे ख्याल में लिंक मुझे नया भेजना पड़ेगा because I'd really like to finish part 2 at least, क्योंकि बीच में बात रह जाएगी तो कल फिर नहीं समझ आएगी. So I'm going to send you guys a new link और हम 2-3 मिनट की और क्लास करें. Alright, so we get sine square theta. This is equals to cos square theta और फिर उस पे स्क्वायर रूट भी है.
So that's just cos theta. लेकिन cos theta के साथ एक और cos theta multiply हो रहा है, so it's going to be cos square theta. कि ये जो है ये cos theta बनता है. Cos square theta का square root, which is cos theta. Okay. D theta. Now let's substitute the limits. हमें conversion ये given है, x equals sin theta. So जब x 1 है, so you take sin inverse 1 in degrees. Sorry, in radians. You get theta equals pi by 2. That's how you get pi by 2 in place of 1. यहाँ पे pi by 2 आ गया. और similarly जब x 0 है, तो angle भी 0 होगा. When x is 0, sin inverse 0 is 0. So then we get 0 there. Okay. अब हमने शो करना है that this should be equals to sin square 2 theta. ये sin square 2 theta कैसे बनेगा? इस फॉर्म में दिखाना है. I don't know if you can properly read that or not. अच्छा, we know that sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. तो ये बन जाएगा sin 2 theta upon 2 equal sin theta cos theta. फिर दोनों का स्क्वायर ले लो, तो हमारे पास बन जाएगा sin square 2 theta upon 4 equal sin square theta cos square theta. इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी. यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया 4, ऊपर आ गया sin square 2 theta d theta. But now I don't need to send a new link. So we get the required form. 1/4 को बाहर लिख लो और अंदर आ गया sin square 2 theta d theta और लिमिट्स आ गए 0 to pi by 2.